See, taxation is a compulsory payment made to the government. Whatever public services we use, we pay taxes to the government. Okay, so everyone can see the PDF that I have shared. Hello. Yes, sir. Yes, so taxation is a compulsory payment made to the government, okay, for the public services that is used. There are basically two types of taxes, okay, direct tax and indirect tax. What is the direct tax and what is the indirect tax? Can anyone tell? See, simply direct tax is the tax that is paid or imposed on the person who has to pay it. We pay directly to the government. Direct tax, that means paying directly to the government. So see, tax is the compulsory payment to the government. So tax goes to the government in two ways. One is directly, that we are paying directly to the government, and the another one is indirect. Indirect means paying the government through shops, through businesses that we are purchasing goods. So if we are purchasing goods, then इसी के लिए बोल रहे थे कि जितने भी डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं ना, दे आर पेड डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस आर पेड इनडायरेक्टली. जैसे जीएसटी, you all know about GST, it has been introduced. So basically GST is indirect tax. First of all, we purchase goods from the shop. While we purchase the goods, we are paying tax to the business, and that business uh, gives the tax to the government. So basically we are not paying directly to the government. That is why it is called indirect tax. And direct tax means income tax, the income that we are earning. So tax. Sir, excuse me, sir. Sir, one more example of direct tax, please take. Of direct tax. Direct tax, income tax, One more example. wealth tax. Okay, basically property tax. Property tax are also the direct tax. The property that we own, we pay the tax on the property. So that is also a direct tax. Okay, sir. Okay. And in indirect taxes, this is the liability shifted to the another person to pay the tax on behalf of us. So basically the customers are the have the liability to pay that tax, but we are paying it indirectly. Now here comes income tax. What does income tax mean? So income tax means a direct tax which is imposed upon the income of a person. Okay, whatever income we are earning, first of all, we will be learning about direct tax. Okay, so in direct tax, we will be getting information regarding income tax. So income tax are the direct taxes which are imposed upon the income of a person. Anything that we are earning, okay, it will be the tax that we are paying on it. That is the salary. Then rent, we are receiving rent and we are paying tax on it. It is also a part of income tax. Or any other, there are 5 basic sources. We will be studying it later. There are 5 basic sources which combines to become an income tax. Okay. So this is a very important point, that it is governed by Income Tax Act 1961. Remember, income tax is governed by Income Tax Act 1961. It was implemented on 1st April 1962. इम्प्लीमेंट होना मतलब लागू होना, ठीक है. लागू कब से हुआ था? 1st April 1962 से. बट एक्ट पास कब हो गया? 1961 में. सो इट इज गवर्न्ड बाय इनकम टैक्स एक्ट 1961 एंड इम्प्लीमेंटेड ऑन 1st April 1962. अब ऐसा नहीं है कि एक्ट 1961 में बना तो वही एक्ट रहेगा. देयर आर सर्टेन चेंजेस हैपनिंग. ये तो चेंज भी हो सकता है. हाँ, वही तो बोल रहे. देयर कैन बी मॉडिफिकेशंस, चेंजेस दैट हैपेंस. तो छोटा छोटा चेंजेस होता है तो हम लोग एक्ट के ईयर को चेंज नहीं करते, उसके ओरिजिन को. बट बहुत बड़ा चेंजेस अगर होगा ना, बहुत ज्यादा चेंजेस होगा ना,
then we will be changing the year also. Just like in company law, if you are aware about it, Companies Act 2013, the new governing act is Companies Act 2013. Previously, it was 1956. So whenever the major changes comes, the year of the act also changes because it is the new origin. Okay. Now it is an important source of income of central government of India. Central government of India gets its main source of income from taxes. Okay, they collect taxes in many and various ways from us: road tax, income tax. Okay, so all that taxes are collected by central government of India. Now, who are liable to pay taxes? See here, who are liable to pay? So individuals, Hindu undivided family, firm, company, cooperative society, association of person, and body of individuals. All these are the persons. All these comes under the person, and all are liable to pay taxes. Individual means we as a person, natural person will be the individuals. We are liable to pay tax. Then comes Hindu undivided family. What is Hindu undivided family? Anyone? Do you know about Huff? No idea, sir. Okay. Hindu undivided family is basically a business that is run by a joint Hindu families. The Hindu families that has not been divided. Okay. And the whole control of the business is with the head of the family. This business is controlled by the head of the family. Nowadays, we does not see much of the Hindu undivided family because the basic need for this is the joint family. There should be a joint family. Okay. So further discussing, so Huff is also Hindu undivided family is also a business that pays a tax. So that is why it is also a person according to Income Tax Act. Then comes firm. Firm means partnership firm. Everyone must be knowing about partnership firm. When two or more persons come together to share profit in future by doing a business is called a firm. Partnership firm basically. And a company, everyone is well aware about company. So cooperative society. Cooperative societies are the society formed by a group of persons coming together with the same objective. Okay. So minimum number of members in cooperative society required is 10. So they also becomes a person. They also have to pay the taxes. So individual, Hindu undivided family, firm, company, and cooperative society. Is it clear to all? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Okay. sir. Now comes association of person. What is association of person? Have you ever heard about it? See, we have discussed over here that individual, Hindu undivided family, firm, company, and cooperative society. All these are the person. Yes or no? They all are the persons according to Income Tax Act. So when they associate among themselves to form a business, then it is called association of person. Association means coming together. And the persons can be either individual, a firm, company, cooperative society. So either whole or any of them can come together. Two of them can come together and form a business will be association of person. Okay. So they are also formed for doing a business to earn a profit. So association is of person is also clear. And then comes body of individual. Body of individual and association of person. The objective of both the businesses are same. But the difference is in association of person, any of the person can be the member. But in body of individual, it is clearly stated body of individual means only individual person. Those who are individual will only become the member of that
business, that is body of individual. Okay. Now, Yes, sir. this is also a real important point that you have to remember. See, one point is it is governed by Income Tax Act 1961. This is really important. You have to remember this. Okay, when the Income Tax Act come into force, so it was Income Tax Act 1961. The other thing that we have to remember is income tax is imposed by CBDT, Central Board of Direct Taxes. Okay, basically it is a department which is under the Ministry of Finance. It is a commission that comes under the Ministry of Finance of central government. So over here, central government decided to form a CBDT which will manage the whole taxation purpose of India. Okay, whether how much tax should be collected, what will be the criteria, and everything is made by CBDT. Is that clear? Yes, sir. So see, so Ministry of, have you ever heard about budget, finance budget? Yes, sir. Or what is finance budget? सर 1 year में एक बार ठीक है, एवरी ईयर फाइनेंस Ministry of बजट Finance- कम्स इनटू फोर्स, है ना, हर साल फाइनेंस बजट आता है। कब Yes, आता है sir. फाइनेंस बजट? सर मार्च अप्रैल में। नहीं, फरवरी में। यस सर। ठीक है, बजट कब आता है? फेब में आता है। इनिशियली स्टार्टिंग में ना, बिफोर दिस गवर्नमेंट बजट आता था 28 फेब को। जब से ये गवर्नमेंट आई है तब से बजट का डेट कर दिया 1 फेब। तो फरवरी एंडिंग में ही आता है ना सर? नहीं, अब 1 फेब को आता है। इस गवर्नमेंट के आने से 1 फेब कर दिया। ये गवर्नमेंट 1 को लाती है बजट। ठीक है, तो जनरली अभी तक इस गवर्नमेंट के आने के बाद से 1 फेब को बजट लाया जाता है। पहले एंड ऑफ द फेब आता था, अब स्टार्टिंग ऑफ द फेब में आता है। ठीक है, तो इस साल भी अभी 1 फेब को बजट आएगा। और बजट सर 31 से 31 मार्च तक फाइनेंशियल ईयर चलता है ना सर? हाँ, वो अलग फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च तक चलता है। ठीक है ना, 1 अप्रैल से स्टार्ट होके 31 मार्च तक चलता है। उसको भी हम लोग इसमें फॉलो करते हैं। अभी हम लोग उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो अभी क्या है कि 1 फेब को बजट आएगा। अब हम लोग टैक्स पढ़ना शुरू किए। वी आर गोइंग टू नो मोर अबाउट टैक्स। So when that budget will come now, we will see there will be changes in tax. Every year there are some changes in tax when that budget comes. So this time if there will be any changes, we will be discussing it. Okay, so everyone will see to that budget. Everyone will learn how to see budget, how to use it in our future tax purposes and everything. अब बात आता है कि जो बजट आता है वो कौन पेश करता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। यस सर। तो अभी हमारे इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? निर्मला सीतारमन। वेरी गुड, निर्मला सीतारमन। सो शी विल बी ब्रिंगिंग बजट इन द पार्लियामेंट ऑन द 1 of the Feb. ओके, नाउ ऑब्जेक्ट ऑफ चार्जिंग इनकम टैक्स। क्या ऑब्जेक्ट है इनकम टैक्स चार्ज करने का? क्यों हम लोग इनकम टैक्स चार्ज करते हैं? मतलब हम लोग मीन्स गवर्नमेंट। Why government charges income tax? So it is a permanent source of income for the central government, that's why, and which is used for the welfare of the society. What welfare of the societies? रोड सेफ्टी, रोड, ब्रिजेस, डैम्स, पार्क्स, है ना, ये सब जितना बनता है सब आउट ऑफ द टैक्स है। अच्छा, और अभी जैसे वैक्सीन, जो वैक्सीनेशन चल रहा है, तो ये वैक्सीन क्या हम लोग से पैसा लेके लग रहा है? नो सर। फ्री ऑफ कॉस्ट। बट जो वैक्सीन ये अक्वायर कर रही है गवर्नमेंट, उस कंपनी को तो पेमेंट कर रही होगी। यस सर। तो कहाँ से? टैक्स से, टैक्स है ना। तो इट इज यूज्ड फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटीज। गवर्नमेंट कहीं पे भी खर्च करती है तो इट इज आउट ऑफ आवर टैक्सेस। क्लियर है? उसके बाद इंट्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट टैक्स स्लैब्स एम्स एट रिमूविंग डिस्पैरिटीज एंड इनइक्वालिटीज बिटवीन रिच एंड पुअर। जितने भी डिस्पैरिटीज होते हैं, जितने भी इनइक्वालिटीज होते हैं ना रिच और पुअर के बीच, उनको दूर किया जाता है। अब कैसे? तो
तो हम लोग ये आगे पढ़ेंगे कि देयर आर डिफरेंट टैक्स स्लैब्स, कुछ को एग्जेम्प्ट किया गया है टैक्स से कि इतने पर्टिकुलर इनकम वाले को एग्जेम्प्टेड है, इतने को इतना ही परसेंट लगेगा, मतलब डिफरेंट डिफरेंट स्लैब्स बनाया हुआ है। अभी हम लोग उसको डिस्कस नहीं करेंगे, टाइम आएगा तो वी विल बी डिस्कसिंग दैट, ठीक है। बट ये समझ लो कि वो क्यों किया गया है, मतलब जो इनकम कम कमाएंगे, दोज हु आर अर्निंग लेस इनकम विल पे लेस टैक्स, एंड दोज हु आर अर्निंग मोर इनकम विल पे मोर टैक्स। सो उसमें ऑटोमेटिकली वो डिफरेंसेस क्या होगा, कम हो जाएगा। सर टैक्स रिलैक्सेशन भी है सर। ठीक है, टैक्स रिलैक्सेशन आर बेसिकली द डिडक्शंस, ओके। यस सर। तो the third point is it encourages people to make savings and investments because of the deduction available to the assessee on their income. So basically savings और investment को कैसे encourage करते हैं टैक्स। अभी डिडक्शन का बात किए थे ना, we have talked about Yes, sir. deduction right now, है ना। So what does that deduction mean basically? So होता क्या है ना कि whenever we invest, ठीक है, whenever we invest in anything like insurance, we are taking insurance, so we are paying insurance premium, so whatever premium we are paying ना, उसका हम लोग को टैक्स में डिडक्शन मिलता है। पोस्ट ऑफिस में अकाउंट खुलता है पीपीएफ, so whatever interest we are getting from that account, उसका हम लोग को डिडक्शन मिलता है टैक्स में। so basically गवर्नमेंट क्या बोल रही है कि if you invest somewhere, तो एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ डिडक्शन आई विल बी प्रोवाइडिंग यू, आपका टैक्स कम हो जाएगा उसकी वजह से। तो लोग टैक्स कम करने के लिए भी सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट करते हैं, है ना। Yes, sir. सो इसी के लिए बोला गया इट एनकरेजेस पीपल टू मेक सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट बिकॉज ऑफ द डिडक्शन अवेलेबल टू द असेसी ऑन देयर इनकम, क्योंकि वहां पे डिडक्शंस अवेलेबल है। फिर बाय मेकिंग इन्वेस्टमेंट मेड बाय द असेसी इट लीड्स टू द कैपिटल फॉर्मेशन इन द कंट्री, और ये इन्वेस्टमेंट्स के कारण क्या होता है, कैपिटल फॉर्मेशन होता है कंट्री में। अब यहाँ पे एक वर्ड आया असेसी। असेसी वो पर्सन होता है जिसके ऊपर लाइबिलिटी होता है टैक्स पे करने का, ठीक है। असेसी इज दैट पर्सन जिनके ऊपर लाइबिलिटी होता है टैक्स पे करने का। तो अभी हम लोग आगे टर्म्स पढ़ेंगे, जब बेसिक टर्म्स पढ़ेंगे तो वहां पे हम लोग ये भी पढ़ेंगे कि असेसी कौन कौन होते हैं। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव्स क्लियर है? Yes, sir. Now there are certain important definitions that we are going to discuss. The first one is assessment year. See the 2 year used here, that is assessment year and previous year, both are generally related to each other, है ना। हम लोग को ये समझना पड़ेगा कि क्या होता है। तो basically assessment year is that year in which taxes are imposed, जब हम लोग टैक्स पे करते हैं। अब सी हम लोग का जो अकाउंटिंग ईयर है बेसिकली 1 अप्रैल को शुरू होता है और 31 मार्च को खत्म होता है। तो अगर वी आर टेकिंग द ईयर 2019 to 2020, ठीक है, सो इफ in 2019 to 2020 we earned income, then when we will be paying tax on it? On the next year, है ना। 1920 में 2019 से 2020 में हम लोग जितना इनकम कमाए उसमें टैक्स कब देंगे, 2020-21 में। Yes, sir. 2020. तो 2020-21 विल बी द असेसमेंट ईयर, किसका, तो 19-20 का, समझे। तो जिस ईयर में हम लोग टैक्स पे करते हैं उसको हम लोग असेसमेंट ईयर बोलते हैं, ठीक है। और जिसमें हम लोग इनकम अर्न करते हैं उसको प्रीवियस ईयर बोलते हैं। तो इन दिस केस 2019-20 1920 will be the previous year and 2021 will be the assessment year. And if 2021 is the previous year, then the assessment year will be 21-22, है ना। तो जिसमें हम लोग इनकम अर्न कर रहे हैं, जिस ईयर में इनकम अर्न कर रहे हैं वो प्रीवियस ईयर है, और जिस इनकम में टैक्स पेमेंट कर रहे हैं वो असेसमेंट ईयर है। क्लियर हो गया ये पॉइंट? यस सर। चलो बहुत बढ़िया। तो अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स एक्ट, असेसमेंट ईयर इज द पीरियड ऑफ 12 मंथ्स, जो कि 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च को एंड होता है, ठीक। And now previous year, तो it is the year in which income is earned by the assessee. It is also called financial year या accounting year. पर क्या है ना कि previous year से related we have to note down certain points, we have to remember certain points. So there are some
important points relating to previous year. See, preceding previous year means financial year immediately preceding assessment year is called previous year. ये तो clear हो गया अभी कि assessment year से just पहले वाला जो year होगा that will only be the previous year. उसके पहले वाले को हम लोग previous नहीं मानेंगे. Clear है? फिर previous year for every source of income मतलब क्या है ना कि previous year for every source of income will be uniform, will be same. That is from 1st April to 31st March. इनिशियली क्या होता था ना, मतलब बिफोर 1989 1990 होता क्या था ना वहां पे कि ऑप्शन दिया जाता था टैक्स पेयर्स को कि यू कैन चूज योर ओन ईयर फॉर पेइंग द टैक्स. दैट मींस someone starting business on Diwali, so they used to tell that from Diwali to Diwali will be our year, we will be practicing that year. Okay, some would follow calendar year, that is from 1st January to 31st December. Matlab there were various previous years that every business used to use. So but क्या होता था, इनकम टैक्स अथॉरिटीज को काफी दिक्कत आने लगी, तो 90 के बाद से क्या कर दिया ना, इट इज अ रूल नाउ कि each and every business, whatever the business will be, all will follow the uniform previous year, that is starting from the 1st April and ending on 31st March. Clear है? Now previous year for a newly started business or profession या new source of income. अब कोई नया बिजनेस स्टार्ट हुआ, नया सोर्स ऑफ इनकम है, तो उसमें क्या करेंगे. अब कोई बिजनेस स्टार्ट हुआ, सपोज करो 1st of January, तो उसका ईयर कब एंड होगा? 31st March. मतलब यहाँ कहने का मतलब क्या हुआ ना कि प्रीवियस ईयर कैन बी ऑफ 12 months और लेस. ठीक है, 12 महीने का भी हो सकता है, 12 महीने से कम भी हो सकता है, बट 12 महीने से ज्यादा का नहीं हो सकता है. ठीक है ना. सो अगर बिजनेस मिड ऑफ द ईयर में भी शुरू हो रहा है ना, तो उसका एंड हम लोग 31st मार्च को ही मानेंगे. जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि बिजनेस 1st January 2020 को स्टार्ट हुआ, तो उसका प्रीवियस ईयर क्या होगा, 1st January 2020 से लेके 31st March 2020 तक, मीन सिर्फ 3 महीने का, बट 31st मार्च को वो एंड हो जाएगा. ठीक है ना. इसके में सर मतलब ये है कि कोई वजह से आगे बढ़ गया डेट, तो क्या इसमें क्या किया जा सकता है सर? क्या चीज का डेट आगे बढ़ गया? तो मतलब कुछ काम के सिलसिले में कुछ आगे डेट भाग गया, पोस्टपोन हो गया कि इस डेट में नहीं कर पाए, तो उसको कैसे करना पड़ेगा? देखो बिजनेस जब स्टार्ट होगा ना, जब बिजनेस वर्क करना शुरू कर देगा ना, हम लोग उस टाइम में से देखते हैं. ठीक है ना. तो वहां से मेरा ये शुरू होता है टैक्स का पर्पस. इनकम जब जनरेट होने लगा, हम लोग तो प्रॉफिट में ना टैक्स देंगे. व्हेन वी स्टार्टेड आवर इनकम, तभी ना हम लोग टैक्स देंगे. तो इसी के लिए वो बोला गया कि जब भी हम लोग का बिजनेस कमेंस होगा, स्टार्ट होगा, फ्रॉम दैट डेट टू 31st March ऑफ दैट फॉलोइंग ईयर. ओके, यस. बहुत बढ़िया. तो इसी के लिए ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लेना. इन केस ऑफ न्यूली स्टार्टेड बिजनेस और प्रोफेशन, न्यू सोर्स ऑफ इनकम या फिर न्यू सोर्स ऑफ इनकम, द फर्स्ट प्रीवियस ईयर शैल बी अ पीरियड ऑफ 12 months और लेस देन 12 months, बट कैन नॉट एक्सीड 12 months. 12 months से ज्यादा का नहीं हो सकता. क्लियर है ये पॉइंट सबको? यस सर. ठीक. नाउ प्रीवियस ईयर फॉर अनडिस्क्लोज्ड इनकम. अनडिस्क्लोज्ड इनकम किसको बोलते हैं? बोलो. अरे ये तो काफी फेमस है, अनडिस्क्लोज्ड इनकम. बेसिकली ब्लैक मनी है ना. ब्लैक मनी इज ऑल्सो अनडिस्क्लोज्ड इनकम. अनडिस्क्लोज्ड इनकम आर दोज इनकम फॉर विच वी डज नॉट पे टैक्स. अगर हम लोग टैक्स किसी इनकम पे नहीं किए हैं और इनकम टैक्स अथॉरिटी अगर आया मेरे पास और हम उसको सही एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाए उसके लिए, तो दैट विल बी अनडिस्क्लोज्ड इनकम. ठीक है. सो वो if an income tax officer find any undisclosed income in case of any person, तो हम लोग उस undisclosed income को क्या मानेंगे कि वो जिस ईयर में पाया गया उसी में उसका टैक्स लगेगा.
ठीक है, उसका ओरिजिन से मतलब नहीं है कि कब कमाया गया था, क्योंकि वो अनडिस्क्लोज्ड है, वो बताया ही नहीं गया कि वो कब कमाया गया। सो कब कमाएंगे उसको, ये हम लोग को आइडिया नहीं है। बट व्हेन वी आर पेइंग टैक्स, वी विल बी पेइंग टैक्स ऑन अनडिस्क्लोज्ड इनकम, जब इनकम टैक्स अथॉरिटी विल फाइंड आउट कि हाँ ये अनडिस्क्लोज्ड इनकम है, जिस ईयर में मिला हमको वो अनडिस्क्लोज्ड इनकम, उसी ईयर में हम उसको क्या करेंगे, टैक्स चार्ज कर देंगे। ठीक है, मतलब उसी को हम उसका प्रीवियस ईयर मान लेंगे, मतलब नेक्स्ट कमिंग ईयर में असेसमेंट ईयर में उसमें टैक्स लगा देंगे। क्लियर है? चलो देखो, अब यहाँ कुछ क्वेश्चंस हैं, वी आर गोइंग टू आंसर दिस क्वेश्चंस, ताकि हम लोग को पता चले कि हाँ क्लियर है कि नहीं है। तो फर्स्ट का आंसर क्या होगा बताओ। डॉक्टर गुप्ता was appointed as a lecturer in Hindu College on 1st August 2018. The assessment year is 1920. You have to tell that what will be the previous year in this case. When the previous year will start and when the previous year will end in case 1. कौशल यस सर। बताओ पहला का आंसर। सर प्रीवियस हाँ बोलो सूरज। श्री जय कुमार इंटरेड हाउस 2 rooms of 5 जुलाई 2018। अरे पहले फर्स्ट का आंसर दो ना, फर्स्ट का क्या होगा। कल दे दीजिएगा, कल वो वहाँ देना है, पाठ्यपुस्तक। प्रीवियस ईयर क्या बोले थे प्रीवियस ईयर कि जब हम लोग का नया सोर्स ऑफ इनकम आ रहा है, जिस दिन से स्टार्ट हो रहा है उस दिन से लेके उसके 31 मार्च, तो प्रीवियस ईयर विल स्टार्ट फ्रॉम 1 अगस्त 2018, है ना। 1 अगस्त 2018 से स्टार्ट होगा और एंड कब होगा, 31 मार्च को। 31 मार्च ईयर 2019, ठीक है ना। 2019 1 अगस्त 18 से लेके 31 मार्च 19 तक। ओके, सेकंड वाले का बताओ। प्रीवियस ईयर हो जाएगा ना। हाँ वो प्रीवियस ईयर है, हम लोग को यहाँ पे Yeah. असर्टेन करना है प्रीवियस ईयर, है ना। यस सर। हाँ सेकंड वाले का बताओ। असेसमेंट प्रीवियस ईयर बताना है, प्रीवियस ईयर क्या होगा। प्रीवियस ईयर इसका होगा सर 27 फेब से लेके 31 मार्च 19 तक। 27 20 होगा सर। 31 मार्च 20 नहीं, 27 फरवरी 2019 से 31 मार्च 2019 ना। यस 2020 में कहाँ से चल जाओगे, 27 फेब 19 है तो 31 मार्च 19 को ना एंड होगा। 31 मार्च 2020 तो ये 1 साल से ज्यादा हो गया, 12 महीने से ऊपर हो गया। सर इसका प्रीवियस बता। हाँ सिर्फ प्रीवियस ईयर बताना है हम लोग को कि इसका previous प्रीवियस year ईयर ही बता देना है सर। हाँ Yes, सिर्फ sir, प्रीवियस ईयर, तो इट विल बी 27 फरवरी 19 से लेके 31 मार्च 2019, है ना। चलो तीसरा वाला तो चलो हो जाएगा। अब चौथा का बताओ, चौथा वाला क्वेश्चन देखो सब पढ़ो। चौथा का बताओ तो क्या आंसर होना चाहिए। 31 मार्च 2019 हो जाएगा सर। 31 मार्च 2019। और कितने अमाउंट को हम लोग उसमें इंक्लूड करेंगे। हाँ, इसमें अनडिस्क्लोज्ड अमाउंट कितना है, फोर्थ वाले में अनडिस्क्लोज्ड अमाउंट कितना है। 50,000 है ना। क्या बोला भाई। 50,000 हाँ, मिस्टर प्रेम कुमार spent 2 lakh in his daughter's marriage on 24th May 2018. He could only explain the source of rupees 1.5 lakh before the income tax officer. Remaining amount of rupees 50 was deemed to be his income. मतलब 50,000 को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया, तो ये क्या हो गया, अनडिस्क्लोज्ड इनकम। यस यस सर। अब खाली ये बताओ कि प्रीवियस ईयर विल बी फ्रॉम 24th May to 31st March या 1st April to 31st March।
question. हम लोग यहाँ पे क्या ले रहे थे ऊपर वाले क्वेश्चन में, जब बिजनेस स्टार्ट किए, जब नया सोर्स स्टार्ट किए वहां से लेके चल रहे थे ना, जैसे 1 अगस्त से 27 फेब से, तो यहाँ पे भी 24 मई से लेके चलेंगे कि 1 अप्रैल से? सर मई से लेकर चलेंगे। चलेंगे सर। नहीं, अप्रैल से लेकर के। अनडिस्क्लोज्ड इनकम है, ठीक है, अनडिस्क्लोज्ड इनकम है, तो वो कब कमाया गया ये नहीं ना पता। 24 मई को तो उस पैसे को हम खर्च किए हैं। सर अगर बिजनेस में लगा रहे हैं तो सर उसी दिन से लेंगे, अगर कहीं अलग खर्च कर रहे हैं तो जिस तारीख का उसी तारीख से लेंगे ना सर। अगर हम बिजनेस में भी लगा रहे हैं ना, तो ये देखना होगा कि अगर अनडिस्क्लोज्ड इनकम है तो वो हम लोग 1 अप्रैल से ही हमेशा लेके चलेंगे अनडिस्क्लोज्ड इनकम को, क्योंकि अनडिस्क्लोज्ड इनकम कब कमाए हैं, कब का पैसा ये नहीं ना पता। नो सर ये सर। तो बाद में मालूम चलता है ना। हाँ, तो दैट इज द पॉइंट ना, कि इनकम टैक्स ऑफिसर फाइंड्स ऑन 2018 ओनली कि देयर इज सम अनडिस्क्लोज्ड इनकम इन द बिजनेस। अप्रैल के मंथ से ही होगा सर ये? हाँ, ये 1 अप्रैल 2018 टू 31 मार्च 2019। यस सर। ठीक है, वो पूरा ईयर को वी विल बी assuming to be the previous year. Okay? यस सर। यस। अभी भी कोई डाउट है, किसी को कुछ पूछना है तो यहाँ तक मैं पूछो। सर ये वाला क्वेश्चन 4 का है ना, मिस्टर प्रेम कुमार हाँ, स्पेंड हाँ। 2 लाख, ये फिर से समझा दीजिए सर फिर से। हाँ, ठीक है। So see, Mr. Prem Kumar spent 2 lakh in his daughter's marriage on 24th of May 2018. यस सर। Okay. He could only explain the source of 1,50,000 before the income tax officer. अभी ऊपर डी पॉइंट जो हम लोग पढ़े हैं, ऊपर जो ये डी पॉइंट लिखा हुआ है, ये है ना प्रीवियस ईयर फॉर अनडिस्क्लोज्ड इनकम। सो अगर वो Yes, sir. 150 को डिस्क्लोज किया तो कितने को डिस्क्लोज नहीं कर पाया? 50,000। ये उसका अनडिस्क्लोज्ड इनकम है। यस सर। नाउ द थिंग कम्स कि ये इनकम कब जनरेट हुआ ये हम लोग नहीं बता सकते, बिकॉज इट इज अनडिस्क्लोज्ड, अनडिस्क्लोज्ड मनी, यस सर। है ना। सो व्हेन ever there will be undisclosed money, na, the previous year will start from 1st of April and ends on 31st of March. ओके यस सर। Okay. Now there are certain exceptions to the rule of previous year. What are these exceptions? There are certain exceptions. Now we were right now studying that there is a previous year and there is a assessment year. Okay, but in certain situations the previous year and the assessment year will be same. Means the year in which income is earned, the tax is paid in the same year only. So there are certain exceptions to this rule. So what are that income? We will be discussing that. First of all is income of non-resident from shipping business. If we are running a shipping business, if non-resident came to India with goods and services, okay, and it is shipped to India, so that company came to India to deliver the goods basically, है ना, passenger goods, whatever, and then the ship will return to its origin country, home country, right? So is it possible ki it will come next time? Is it surety, there are any surety that that ship will come next time also? There is no surety that that ship will come next time or not. So for this non-resident shipping business, it is clearly mentioned that whenever a ship will come from any other country, non-resident will come from that ship will not be allowed to leave India until the tax is paid on it. So whenever they will come to India, they will first of all pay the tax and then only they can leave India. And the rate of tax will be 7.5%. Okay. Yes. सबको समझ में आया? कोई दिक्कत है? So second is income of person living India. If anyone is living India permanently or for some many years, means for education purpose or for the employment, and for employment many of the people goes outside India and they don't have the intention to return to India in same year or any future years. So it will be told that first of all they will have to pay the tax on the income,
and then only they can go outside India for whatever purpose they are going. If they does not have to return, if someone is going outside India just for visit, है ना, tourism places, so उसके लिए ये अप्लाई नहीं होगा, बिकॉज वो लोग परमानेंटली इंडिया से नहीं जा रहे हैं, इस इंटेंशन से नहीं जा रहे हैं कि हमको इंडिया वापस नहीं आना है. दे विल कम टू इंडिया. इफ देयर इज एन इंटेंशन कि आई डोंट हैव टू रिटर्न टू इंडिया, then in that case first of all we will have to pay the tax and then only we can leave India. Okay. तो इसी के लिए जिस ईयर में भी इनकम अर्न होता है ना, उस ईयर में इंडिया अगर हम छोड़ के जा रहे हैं तो हमको टैक्स देकर ही जाना है. तो उसके लिए नेक्स्ट ईयर असेसमेंट ईयर नहीं होगा, वही ईयर असेसमेंट ईयर होगा जो उसका प्रीवियस ईयर है. क्लियर है? यस. Yes, sir. Okay. Now, assessment of persons transferring property with a view to avoid tax. Many of the person transfer their properties to avoid taxes to their family members. Suppose in a family, a father transfers his property to his son or a daughter to avoid the tax. So if income tax officer will assess that no, this transfer has been made to avoid the tax, then it will be included in the persons. That is the father who transferred the property. He will only be paying the tax, and in that year only in which the property was transferred. So no one can transfer the property with a view to avoid tax. क्योंकि क्या होता है कि if there are a lot of property in my name, suppose, so I will have to pay a lot of taxes in that, है ना, because the income is going on increasing because of that. So to avoid that, क्या कर सकते हैं कि हम किसी और को ट्रांसफर कर दिए, हम अपने भाई को ट्रांसफर कर दिए प्रॉपर्टी, कुछ प्रॉपर्टी किसी और को ट्रांसफर कर दिए, 2-3 जगह हम प्रॉपर्टीज ट्रांसफर कर दिए. अब सबका इनकम कम हो गया. क्या पढ़े थे हम लोग पहले? इनकम बढ़ता है टैक्स बढ़ता है, इनकम घटता है टैक्स घटता है. तो अगर हम Yes, प्रॉपर्टीज डिस्ट्रीब्यूट कर दिए Yes. 4 लोगों में, तो मेरा इनकम कम हो गया, अब हमको टैक्स कम देना पड़ेगा. Yes, sir. और टैक्स भी कम दे. हाँ, तो इसी के लिए वो टैक्स अवॉइड करने के पर्पज से ना हम ट्रांसफर किए थे. अब ये पता कैसे चलेगा कि हम टैक्स अवॉइड करने के पर्पज से ट्रांसफर किए? सपोज करो कि हम अपने भाई को या किसी को भी प्रॉपर्टी बेचे, 1 करोड़ की प्रॉपर्टी 10 लाख में बेच दी. तो इनकम टैक्स ऑफिसर विल आस्क ना कि व्हाई यू सोल्ड प्रॉपर्टी वर्थ 1 करोड़ in just rupees 10 lakhs. What was the reason behind that? है ना? So all Yes, these sir. transactions are done to avoid the taxes. Clear है? Yes, sir. चलो बहुत बढ़िया. And the last point is discontinued business or profession. Discontinued business or profession means the business that is going to be closed this year will be taxed this year only. AOP क्या होता है सर? देखो, AOP is association of person, अभी हम लोग ऊपर डिस्कस किए थे. AOP is association of person, BOI is body of individual. Yes, sir. है ना? अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो यू कैन आस्क अगेन, आई कैन एक्सप्लेन इट अगेन. जब तक तुम लोग को Okay, डाउट है तुम लोग पूछोगे, आई कैन एक्सप्लेन, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, 10 बार पूछो, आई कैन एक्सप्लेन इट. बट जब हम तुम लोग से पूछेंगे ना तो हमको चाहिए कि तुम आंसर करो फिर. ठीक है? Yes. बढ़िया. So discontinued business or profession, AOP, BOI. क्लियर है? Body of individuals. So if a business or profession is discontinued in any assessment year, their taxes will be levied on that year. आवाज नहीं आ रहा सर, आवाज कट के आ रहा है. अभी क्लियर नहीं है? अभी क्लियर है? Yes, sir. अभी ठीक है. Yes. हाँ, तो ये 14 पॉइंट क्लियर हुआ ना? 4 पॉइंट इज क्लियर ना? Yes, sir. Yes, sir. तो देखो, हम लोग आज जितना कुछ पढ़े उसमें कहीं पे किसी पॉइंट में कोई दिक्कत है? सर PDF सेंड कर दीजिए हम लोग. PDF आई विल बी सेंडिंग इट इन द ग्रुप. Okay, sir. ठीक है ना? बट अभी तक में Okay, यहाँ sir. तक में कोई दिक्कत आया? कुछ पूछना है?
No, sir. नहीं. Who is the class representative? Yes, sir. Okay. Send Arpita. me the attendance of all. Okay, sir. Okay. Okay, sir.